हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नम्मा सीए। आई एम सीए नम्रता अग्रवाल। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 1 फाइलिंग का ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। और अगर आप भी अपना ITR 1 फाइल करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज है हाउ टू फाइल दैट, देन डोंट वरी। आज की इस वीडियो में ITR 1 फाइलिंग का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इजी वे में समझाने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। और साथ में यह भी बताऊंगी ITR 1 किस पर एप्लीकेबल है और हमें उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट रेडी रखने हैं। लेट्स अंडरस्टैंड ITR 1 किन्हें भरना है। इंडिविजुअल एंड HUF जिनकी ये 5 टाइप की इनकम है वो ITR 1 भर सकते हैं। फर्स्ट, इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम, एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A अप टू 1.25 लाख रुपीज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में शेयर मार्केट का गेन एंड इक्विटी म्यूचुअल फंड का गेन कवर होगा, जो कि विद इन लिमिट 1.25 लाख तक होना चाहिए। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए, कोई और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं होना चाहिए अदर देन 112A, एंड कोई ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस नहीं होने चाहिए। देयर आर सम एक्सक्लूजन्स। इन केसेस में हम ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं इफ टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 50 लाख, इफ वी होल्ड फॉरेन एसेट्स, इफ वी आर डायरेक्टर इन अ कंपनी, एंड इफ वी इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। तो इन चारों केसेस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। So this is the document list which will require for filing ITR 1. तो ITR 1 के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फॉर्म 16, 26 AS एंड AIS, जो कि आप इनकम टैक्स वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ फॉर क्लेमिंग डिडक्शंस, अदर सोर्स इनकम प्रूफ्स, होम लोन सर्टिफिकेट एंड कैपिटल गेन स्टेटमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फाइल ITR ऑन इनकम टैक्स वेबसाइट। फर्स्ट, लॉग इन टू इनकम टैक्स वेबसाइट। लॉगिन के बाद आपको डायरेक्ट फाइलिंग सेक्शन रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपके केस में ऐसा नहीं है, देन गो टू E-फाइल हेड। इन इनकम टैक्स रिटर्न क्लिक ऑन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। उसके बाद आपको ऐसी स्क्रीन दिखाई देगी। तो यहाँ पहले असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। हम फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 25-26। सेलेक्ट 25-26। नेक्स्ट इज मोड ऑफ फाइलिंग। यहाँ हम ऑनलाइन फाइलिंग समझेंगे, सो क्लिक ऑन ऑनलाइन। ऑफलाइन में आप एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। क्लिक ऑन कंटिन्यू, क्लिक ऑन स्टार्ट न्यू फाइलिंग। हियर यू नीड टू सेलेक्ट स्टेटस, सेलेक्ट इंडिविजुअल, जो कि बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होगा। क्लिक ऑन कंटिन्यू। हियर वी नीड टू सेलेक्ट ITR फॉर्म, वी आर फाइलिंग ITR 1, सेलेक्ट ITR 1। क्लिक ऑन प्रोसीड विथ ITR 1। यहाँ एक नोट पॉपअप होगा कि ITR की बाय डिफॉल्ट रिजिम न्यू रिजिम होगी। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ हमें ITR फाइलिंग का रीजन प्रोवाइड करना है, तो सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रीजन। Here I am selecting first, that is taxable income is more than basic exemption limit, and click on continue. यहाँ एक नोट पॉपअप होगा, that is our ITR will be pre-filled based on our AIS and PIS. Click on OK. Now you can see 5 schedules are reflecting. We need to fill all the schedules and confirm that. Our first schedule is personal information. Click on personal information. Here you can see all data will be pre-filled. You just need to cross-check. If you want to update your contact detail, click on edit button and update your contact detail. Next is nature of employment. If you are employee of central government, select central government. If you are a pensioner, select pensioner. And if you are an employee of private company, then select others. Here I am selecting others. Next is filing section. Our filing section will be 139(1) because we are filing return before the due date. Next is selection of tax regime. If you want to go with new tax regime, select no. By default no ही select रहेगा. And if you want to go with old tax regime, select yes. फर्स्ट हम न्यू टैक्स रेजिम में कैसे ITR फाइल करना है समझेंगे।
एंड बाद में ओल्ड टैक्स रिजिम की फाइलिंग समझेंगे। So I'm selecting no for new tax regime. Next is bank details. In bank detail, you have to add your bank account and validate it. At least one account add and validate होना चाहिए for getting income tax refund. और अगर एक से ज्यादा account है तो you will have to nominate one account for the refund. Click on confirm. Here we can see our personal information schedule has been completed. Our next schedule is gross total income. Click on this. Gross total income में income के 5 heads हैं. Income from salary, income from house property, income from other sources, exempt income and income from long term capital gain under section 112A. अब हम सारे हेड्स को वन बाय वन समझते हैं एंड फिल करते हैं। हमारा फर्स्ट हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें डेटा मोस्टली प्रीफिल रहेगा बेस्ड ऑन योर फॉर्म 16 एंड एआईएस। सो क्रॉस चेक एंड एडिट इफ रिक्वायर। और अगर डेटा प्रीफिल नहीं है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग उसे फिल कर सकते हैं। So my total salary is this. एंड न्यू टैक्स रिजिम में मोस्टली अलाउंसेस नहीं होते हैं लाइक एचआरए एंड एलटीए। मोस्टली अलाउंसेस रहते हैं वो रिटायरमेंट से रिलेटेड रहते हैं। दिस इज द लिस्ट ऑफ अलाउंसेस व्हिच आर अलाउड इन न्यू रिजिम। यू कैन गो थ्रू इट एंड सेलेक्ट इफ यू आर एलिजिबल। सो इन माय केस देयर इज नो अलाउंसेस। न्यू रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का अलाउड होता है, वो ऑटोमेटेड पॉपुलेट हो जाएगा। एंड न्यू रिजिम में पीटी का डिडक्शन नहीं मिलता है तो इट विल बी डिसेबल एंड जीरो। नाउ क्लिक ऑन सेव। Our next head is income from house property. For filling the detail, click on edit button. Select the type of house property. अगर आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है तो उस पर होम लोन ले रखा है तो न्यू रिजिम में उसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपकी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, मीन्स आपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर रखा है, रेंट पे दे रखा है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रेंट का फिगर भरना है। टोटल ईयर में आपने कितना रेंट रिसीव किया है। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख का रेंट रिसीव किया है। और उस प्रॉपर्टी पे अगर कोई लोकल टैक्स पेमेंट किया है, फॉर एग्जाम्पल 5,000 का लोकल टैक्स पेमेंट किया है हमने उस प्रॉपर्टी पे, वी क्लेम डिडक्शन हियर। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट पेड ऑन होम लोन। अगर आपने उस हाउस प्रॉपर्टी पर कोई होम लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट का रिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको टेबल भरनी होगी अंडर सेक्शन 24B। लास्ट ईयर आप डायरेक्टली अमाउंट मेंशन करके उसका डिडक्शन ले सकते थे, बट इस बार से आपको पूरा डिटेल देना होगा। उसके लिए आपको एक टेबल फिल करनी होगी अंडर सेक्शन 24B। नाउ फर्स्ट क्लिक ऑन सेव बटन and go to that section 24B for claiming deduction of home loan interest. Click on add button. From this year onward, we need to provide home loan detail. So first loan taken from, if you have taken loan from bank, select the bank. Here we need to provide bank name. Next loan account number, date of sanction of loan, home loan amount, that is 25 lakh in my case. Loan outstanding on last day of financial year, that is 31st March 2025. That is loan of 20 lakh is remaining. Next is interest on home loan, which we have paid in financial year 24-25. That is 2,10,000. Now click on save button. Now you can see in head of income from house property, the interest amount populated here. Our next head is income from other sources. Click on it. यहाँ हमारा मोस्टली डेटा प्रीफिल रहेगा अकॉर्डिंग टू अवर एआईएस। एआईएस को डाउनलोड करने के लिए गो टू एआईएस हेड,
Click on proceed button and select financial year and download your AIS. After cross-checking your income with your AIS, if you want to edit that, select the income and click on edit button and update the income. If you want to add any other type of income, click on add button. Here select the nature of income, select the appropriate income like interest from deposit, mention the amount and click on save. Here you can see our interest on FD has been added here. In the same way, you can add your other income by clicking on add button. Our next head is exempt income. Exempt income is not chargeable to tax, but for the reporting purpose, we need to provide the details. Click on it. Click on add button. Here we need to provide nature of our exempt income. Select the appropriate nature of income. This is the list. I am selecting agriculture income less than 5,000. My agriculture income is 4,000. Click on save button. Here we can see 4,000 is not added in gross total income. Our next and last head is income from long-term capital gain under section 112A, which is not chargeable to income tax. यह हेड गवर्नमेंट ने आईटीआर 1 में इसी ईयर में ऐड किया है। अर्लियर हमें 1 रुपीज का भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था तो उसके लिए हमें आईटीआर 2 फाइल करना पड़ता था, लेकिन अब हम एग्जम्पशन लिमिट यानी 1.25 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि शेयर मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड से हुआ है को हम आईटीआर 1 में ही रिपोर्ट कर सकते हैं। So first mention sell consideration, that is sell value of fund. For example, my sell value of fund is 5 lakh. Next is cost of acquisition, that is buying value. My buying value is 4 lakh. My long term capital gain is 1 lakh. It is within exemption limit of 1.25 lakh. Here you can see the note, maximum gain should be 1.25 lakh. Click on confirm button. Our next head is total deductions. Very few deductions are allowed in new regime, like contribution to NPS by the employer under section 80 CCD2. Click on edit button and update the figure. Our next deduction is contribution to Agnipati scheme, that is available to central government employee. So it is disabled for us. Now click on confirm. Our next schedule is tax paid. Here mostly data will be pre-filled as per your form 16 and 26AS. To download your 26AS, go to e-file head and income tax return, click on view form 26AS. First is TDS on salary. Click on TDS on salary. Cross check your details. If you want to edit detail, then select it and edit it. And if you want to add any another detail, click on add button and add detail. In same way, you can check other TDS schedules and edit and add the details if required. Click on confirm. Our next schedule is verify your tax liability. Click on it. In verify your tax liability, you can check your gross total income, total deductions and tax payable on that, any rebate, any interest computation if applicable. So this is our total tax payable. Click on confirm button. Now go to proceed to verification. This is the calculation of our taxable income. Here you can cross check your income like salary income, house property income, other source income and long term income. And eligible deductions, total taxable income, tax payable and total tax paid to TDS
and advance tax and self assessment. In our case, tax paid is less than our tax liability. So amount payable is this. For paying the tax amount, click on pay now and pay the amount. After paying the amount, you need to verify the return and submit. Now we will understand how to file ITR under old tax regime. Back to the summary. तो हम ओल्ड रिजिम सेलेक्ट करते हैं और जहां जहां चेंजेस होंगे वो आपको मैं इजी वे में बता देती हूँ. फर्स्ट क्लिक ऑन पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड सेलेक्ट ओल्ड रिजिम. Select old regime. Click on confirm button. Then click on gross total income. ग्रॉस टोटल इनकम में मेनली हमारा चेंज आएगा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में. नाउ वी अंडरस्टैंड कि सैलरी हेड में क्या चेंजेस है. क्लिक ऑन एडिट बटन. दिस फिगर विल बी सेम. In additional, you can claim the deductions like HRA and LTA in salary head. Go to exempt allowances, click on LTA and provide the figure. This is my dummy form 16. This is my salary breaker. My LTA deduction is 35,000 as per form 16. You can write figure here. Next is HRA. अगर आप HRA के लिए भी एलिजिबल है then select the HRA. अब हम लास्ट ईयर की तरह डायरेक्ट फिगर नहीं लिख सकते हैं, उसके लिए हमें पूरा HRA का शेड्यूल भरना होगा. दिस इज द शेड्यूल फॉर HRA. क्लिक ऑन दिस. First select the place of work. Your city is come under metro or non-metro, you have to select that. In my case, it is non-metro. Here you need to mention HRA received figure. This is my salary breakup. I received the HRA of 4,50,000. Next is rent paid. Rent paid for the financial year 24-25 is 4,20,000. Next, basic salary. My basic salary is 9 lakh. DNS allowance is not available in private company, so it is 0. Next, you will have to mention 50% or 40% of your salary. 50% in case of metro city and 40% in case of non-metro city. So 40% of my basic salary 9 lakh will be 3,60,000. So my eligible exemption is 3,30,000. It will automatically populate here in HRA column. If you are eligible for any other exemption, click on add button and add that. ओल्ड रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का ही अलाउड है, जो कि ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, जबकि न्यू रिजिम में हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 का मिलेगा. ओल्ड रिजिम में हम लोग पीटी का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. सो माय पीटी एज पर फॉर्म 16 इज 2,400. Click on save button. Our salary head has been completed. Next is the house property. Click on edit. लेटर प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली सेम रहेगा जैसा कि हमने न्यू रिजिम में किया है. चेंजेस आएगा सेल्फ ऑक्यूपाइड में. ओल्ड रिजिम में हम सेल्फ ऑक्यूपाइड केस में भी इंटरेस्ट का रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. सो गो टू सेल्फ ऑक्यूपाइड. So for claiming interest deduction, fill the table under section 24B. As we already filled that table under new regime, that's why ये figure यहाँ populate हो रहा है. Click on save button. Click on section 24B. Click on edit button. You will have to provide your loan details to claim deduction of interest on home loan in same way as I shown in new regime. Click on save button. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेम रहेगा जैसा कि हमने न्यू रिजिम में किया है. एग्जम्प्ट इनकम भी सेम रहेगा.
एंड इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी सेम रहेगा। क्लिक ऑन कंफर्म। अब चेंज आएगा हमारे डिडक्शंस में। क्लिक ऑन टोटल डिडक्शंस। In old regime, we can claim all deduction like ATC, ATCCD and ATD. So our first deduction is ATC. Click on edit button. लास्ट ईयर हम ओनली फिगर डाल के डिडक्शन को क्लेम कर सकते थे, लेकिन इस साल से हमें पूरा डिटेल्स देना होगा। तो क्लिक ऑन ऐड बटन। इन माय केस एटीसी डिडक्शन इज 1,50,000. दिस इज द ब्रेकअप फॉर द एटीसी डिडक्शन. पीपीएफ अमाउंट इज 1,08,000. And here you need to provide policy number or document identification number. So for PPF, you need to provide UAN number or account number. So in my case, account number is, click on save button. In same way, by clicking on add button, we will add PF and LIC. And for PF, we will need to provide account number, and for LIC, we need to provide policy number. मैंने यहाँ तीनों ऐड कर दिए हैं अंडर सेक्शन 80C. Click on save button. Here you can see our total deduction claim is 1,50,000 under 80C. And now I have eligible for deduction 80CCD 1B. Click on edit button. My self contribution to NPS is 50,000. And here you need to provide PRAN number. So in my case, it is 110. Click on save. Now you can see we have claimed ATC 1,50,000, ATCCD 1B 50,000. Now our next claim is ATD, health insurance premium. Click on edit button. Here I want to claim health premium for myself. So I am not a senior citizen. Click on no. Click on add. From this year onwards, you have to provide full details of your insurance, name of insurance company, policy number, and health insurance amount. As per Form 16, my ATD deduction is 22,914. Click on save. If you have taken more than one policy, click on add button and you can add that. अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल इंश्योरेंस का क्लेम करना चाहते हैं, then do the entry in the same way. Click on save button. My next eligible deduction is under section 80 TTA. Click on edit button. Here you can mention maximum eligible deduction, that is 10K. So here I am writing 10K. The eligible figure will be automatically populate here. So I will mention the correct figure. Then click on save button. So in same way, you can claim other deduction if you are eligible for anything else. Go down and click on confirm. Our next schedule is tax paid. This will be exactly same as I explained in new regime. Click on confirm. Our last schedule is verify your tax liability details. Click on it. Check your gross total income, total deductions and net income. And also check computation of tax payable. And then click on confirm. Click on proceed to verification. This is calculation of taxable income, gross total income, deductions claimed, tax payable and tax paid. Cross check all the details. In my case, tax liability is less than tax paid.
So I am eligible for refund. Click on preview and submit your return. Confirm your details. Click on proceed to validation. Validation successful. Click on preview. Preview your return. Click on proceed to validation. Validation successful. Click on proceed to verification. यहाँ पे आप अपना रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं. By clicking on e-verify now, you will get OTP on your registered mobile number with Aadhaar. Click on continue. Click on e-verify through OTP. Click on continue. Select and generate Aadhaar OTP. Enter your Aadhaar OTP and validate it and submit your return. In this way, you can file your ITR 1. अगर आपको कोई query है, then write in comment section and don't forget to like and share my video and subscribe my channel. Thank you for watching.